Hello everyone, good morning. Good morning guys, how are you all? Hello everyone. So, ମୁଁ ସୁଦୀପ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି. This is StudyIQ OPSC. So guys, ଆଜିର ସେସନ୍ ଆମର ରହୁଛି EVS regarding ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି most of the students ଙ୍କର question ଆସୁଛି କି ମ୍ୟାମ୍ EVS କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି but science ର question most of the biology questions and the science question ଆସୁଛି. Guys ଆମେ 6th ରୁ 12th NCERT cover up କରୁଛେ both science and EVS ରେ. So EVS ରେ ନା 6th ରୁ standard ଯେତେବେଳେ start ହଉଛି ତ science ରେ କିଛି EVS वाला क्वेश्चन ना मर्ज ହେଇକି ଆସୁଛି ସେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଇडिया ନଥାଏ କୋଉଟା EVS को ଆମେ डिस्टिंग्विश କରିବା କୋଉଟା କରିବାନି तो एटा टिके मिक्स ହେଇକି क्वेश्चन आसीबो आज ट्राई करिछि तमानकु टिके सेपरेट କରିବା ପାଇଁ स्टिल होप तमानकु आज क्लास भल लागिबो so guys let's start the class तो हमारा प्रथम बैच फॉर OSSC CGL ऑफर एंड होची on 18th April already तार दीटा बैच लॉन्च हे सारी छी दिस इज द थर्ड बैच जदि आपण माने चाहुचंती आपण को प्रिपरेशन को टिके बूस्टन करिवा लागि टिके स्ट्रांग करिवा लागि then do join with us by using my code SSP live then you can get the least discounted price that is 1800 okay so in the same way प्रारंभ बैच also हमारा लॉन्च हे सारी छी like aguru dita batch launch हे सारी छी this is also the third one जोटा कि हमरा for previous to dita batch पूरा full हे सारी छी पिला माने बहुत संख्या रे join करिसंती बहुत खुशी लागुची and जदि आपण माने भी चाहुचंती आपनकर OPSC ASO 2025 पई prepare करिबा लागि then guys do join the batch by using my code SSP live so that you can avail with the discounted price 1799 okay so start kariba the first question of the classroom. Let's see the first question of the class kon अछि. So from starting mu तमनक पे गोटे कोड रखी छी जोटा कि तमनक टिके encourage करेइबो preparation पई. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. तो गाइस जदि तमे गोटे भलो सुंदर स्वप्न तमरा भविष्यत को नेकी न देखिबो ताहाले तमे सेटा को साकार करिया पछरे केबे दौड़िबोनी तो फर्स्ट गोटे भलो हेल्दी एंड गोटे रियलिस्टिक फ्यूचर ड्रीम देखो देन जाई कि तमे ताको साकार करिया पई ता पछरे गोड़ेबो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस yeah very good morning Sovan. So the first question of today's class is which of the following animals is an omnivore? Tell me which of the following animal is an omnivore? The options are cow, lion, bear or snake. What will be the right answer? Omnivore animal ethru kiye the category of omnivore already तमने अभी तुरु किछि जानी पारुथुबो जे कि tell me the right answer guys then we'll say what is the description about the omnivore. So guys the right answer will be this is bear okay so आपण माने odd one out करि परिबे guys देखो cows only vegetarian रे जाउची lion only non vegetarian रे जाउची सेम snakes भी हमारा only non vegetarian रे जाउची but bear जे के हमें काहे कि ताको कहूचे this is a omnivore guys ये ना like both केते बळे requirement अनुसारे
fruits भी खाई परिबो like vegetarian भी हेई परिबो and केबे केबे non vegetarian भी थिबो. So an omnivore is an organism or an animal that consumes and uses both animal and plant materials for energy to carry out biological processes. Okay, so brown bear are omnivores. Their diet consists of meat and plants too. Okay, next class देखो. So guys, tell me, herbivorous animals mainly feed on. Herbivorous animals mainly feed on. The options are insects, plants, meats, or both A and B. Tell me what will be the right answer. Herbivorous animals mainly feed on what? Insect, plants, meat, or both A and B. Good morning, Sai Prasad. Answer there. What will be the right answer of herbivorous animals mainly feed on? This is plants. Okay, so तो मैंने A and B choose करिबो guys. Insect and plants both जे खाउचंती एबे just तमानु को कौन कहली? This is guys omnivore. Okay, so this is not omnivore. पचारिची का विषय ना herbivore. Herbiru H ru herb ru कोन गच्छ आसुची. So herb मन पकेबो herbivorous, that means total vegetarian हेइथिबे. Those are okay. So एबे आंसर दियो herbivorous कोन हबो ना only plants. Only plants. Next question answer दियो. So herbivorous are animals that only eat plants. These can be this can be flowers, fruit, nuts, grass, or even wood. So basically, all the vegetarians are count as a herbivores. Next, the sharp incisor teeth. The sharp incisor teeth in herbivores are used for. Herbivores रे जो sharp teeth use हुए सेटा कोथि पे use हुए for the tearing flesh. Guys, flesh कथा sorry guys, flesh कथा कोथि पे आसिला आसिबनी because herbivores कथा पचारिची and chewing bones भी कोठु आसिला तो herbivores कथा पचारिची ना. So cutting grass and leaves. The right answer will be cutting grass and leaves. Okay, next guys, so these are the human with the normal teeth जानिचो. Herbivore मानकर टिके like a type रो teeth थाए मतलब cows हो goat हो ये मानकर तुम्हें teeth देखी थी वो. And omnivore also this kind of teeth दिटा cranial teeth तंकर थाए pointed out है कि carnivore मानकर भी also in same way. Okay, next guys answer दियो. Carnivores have which type of teeth adapted for their diet? Carnivores have which type of teeth adapted for their diet? Flat molars, strong canines, or long incisors, or none of the above. Tell me what will be the right answer, guys? Carnivores have which type of teeth adapted for their diet? So the right answer will be this is strong canines. So the carnivores are the type of ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ already କହିଥିଲି ସେମାନେ କୋଉ type ର diet ନିଅନ୍ତି and guys କୋଉ teeth ରେ ନିଅନ୍ତି and this is strong canines. Okay, so what is a carnivore, guys? Like carnivores animal is one that primarily feeds on meat or other animals. Depend करे कहा उपरे ना meat उपरे or other animals उपरे depend करे for their food. Their diet consists mainly of live or dead prey which they capture or hunt to obtain their food. ओके से माने एकदम जो माने मरी के आगुरु पड़िथिबे सेमान को से माने शिकार करिवेनी कि तांकर फूड भाबरे सेटा को एक्सेप्ट करिवेनी तांकर फ्रंट रे से जहा को शिकार करले ताकू ही ओनली फूड भाबरे एक्सेप्ट करिवे. Okay, so carnivores have physical adaptations and hunting skills that allows them to capture and tear apart their prey. Next question, guys.
which animal is a filter feeder? Guys, filter feeder कौन and को animal या भितरु filter feeder category रो? Is that tiger, is that elephant, is that dog or whale? Guys, tiger, elephant, dog ये तीनटा तमन को टिके similar लागुनी? So right answer कोटा हबो अडवान आउट कर देबो तो कोटा हबो ना फिल्टर फीडर ऑब्वियसली गुटे माछ ही जदी थिबो ना सेई कैटेगरी रो अंडर रे गले से माने फिल्टर करि परिबे सो फिल्टर अंडर रे की आसीबो ना व्हेल आसीबो केमिति आसीबो गाइस देखंतु तार का पोर्स अछि cilia branches and the mucous and the combs these are the parts this is what this is the pores okay and guys cilia these are the branches this is the this is guys cilia and these are the mucus and guys these are the pores these are the combs so these are the parts of inside the whale body जोटा हेल्प करे फिल्टर करिबारे small जदी ए पोर्स रे कोन देते स्मॉल माइन्यूट टाइप रो थिबो एनिमल से लेके छोटो छोटो फिश हेले तो से माने ता थ्रू दे कि से माने जाई परिबे भीतर को माने से मानकु से कोन गोटे कहे गोले छाणी के भीतर को नबो टू द स्मॉल फोर्स एंड डिफरेंट पार्ट्स भी तार अछि जोडा कि डिफरेंट टाइप रे यूज से करे बट दिस इज द मेन पार्ट्स जा थ्रू रे से कोन ना फिल्टर प्रोसेस को कंप्लीट करे नेक्स्ट गाइस animals that eat dead and decaying matter are called एबे कहतिली कि lion हैला the carnivores केबे dead ऊपर डिपेंड करिवेनी so dead ऊपर डिपेंड किए करूची गाइस देखंतु herbivores तो हबनी because these are the herb वाला माने vegetarian carnivores कहले त मानकु निजे शिकार करिके खाइबारे बिलीव करंती dead ऊपर बिलीव करंतीनी so parasites कोन गाइस जहां पर टोटल डिपेंडेंट हुए हमरा फूड पाई बट रेस्ट कोटा रहिला दिस इज स्कैवेंजर्स तो स्कैवेंजर्स कोन देखंतु the animals that consume carrion that means dead animal meat example vultures hela eagles hela crows hela and the hyenas hela these are the animal depends upon the dead animals for their food Rimoi Das, a lady posted as a teacher, ma'am. What is filter feeder, ma'am? Filter feeder is the process जो थे कि से जमती कि पानी रे बहुत सारा कौन बड़ा माछ अछंती छोटे माछ अछंती तांको डिफरेंट लाइक डिस्टिंग्विश करिकि ता बॉडी भीतर को से निये जोटा कि बहुत सारा पार्ट्स थिबे ता थ्रू रे को पार्ट्स देई कि से माने छोटे माछ मान को नबो को पार्ट्स देई कि बड़ा माछ को नबो जोटा कि स्केलेटल वाला माछ थिबे जो मान को डाइजेशन करिया पे टिके लेट प्रोसेस हबो ता डिफरेंट पार्ट देई कि से भीतर को नबो हो श्रीमयी दास नॉलेज बढ़िबा पे क्लास करे आपनकर थैंक यू सो मच श्रीमयी चंद्रशेखर जय जगन्नाथ न्यू स्टूडेंट कुमार श्रीतम अच्छा तुम्हें आसी थिला गुरु parasites not parasites this is scavengers will be the right answer okay next class which of the following is a ruminant animal guys tell me which of the following is a ruminant animal the dog the cow the lion or the rabbit tell me what will be the right answer how can I contact with you ma'am via telegram via telegram sorry Sriva you cannot contact with me so how this is the right answer will be cow so guys ruminant कौन तो ଗୋଟେ process थाए okay तो जोटा कि usual
ह्यूमन कर रुमिनांट प्रोसेस न थाए या फिर अदर जो हमर एनिमल्स अछंती मोस्टली से मानकर रुमिनांट प्रोसेस रे न थाए जो मानकर रुमिनांट थाए दिस इज द पोजीशन गाइस जोटा कि स्पेशल गोटे तांकर स्टोमक भितरे रुमिनांट पार्ट थाए जोटा कि तांकर कहबा कि हमें लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन टिके टाइप रो डेवलप हेगी थाए सो दैट तांकर भितरे ना तांकर खाद्य नळीटा खाद्य रो जो लाइक स्टोमक टा टिके अधिक स्पेसियस थाए बहुत सारा खाद्य सेतिर हमरा धरि पारे तो ruminant digestion system तांकर टिके डिफरेंट थाए rather than the animal. Okay, so rumen first, this is the part of rumen guys, this is known as rumen, and then your reticulum, then omasum, then the abomasum. Okay, these are the different digestion system of the cow. Once to the class would make a CB digestive system of different animals so that human को to different अच्छी then the ruminant digestion system for sure तमन पे आनी भी and बहुत जल्दी भी human body उपरे and other animal body उपरे कौन different रही ची जेमिति के just xenotransplantation हैला like गोटे pig रो liver plantation है ची human थी रे तो केमिति हैला कहीं की ही परिला pig रो human सहित केते well linkage अच्छी तापरे भी class आसुची okay. Yes, yes, Kumar Sritam, right. Next, what is the main food of a panda? Now tell me what is the main food of a panda? See, this is like panda. Panda ki koi dabani. Okay. So, is that bamboo or meat or fruits or fish? Tell me, what is the main food of a panda? Yes, so the right answer will be guys bamboo. So bamboo is the main food of a panda. Why not meat, fruits or fish? Like mostly digestion तांकर like थाए ना favorite food से माने तांकर digestion जदि like process को हमें माने देखी थी cows माने भी most of the time तांकर indigestion हेई थिले से माने उनको कौन बांसो पत्र दिया जाए for तांकर digestion process को smoother करिवा लागी. So next guys देखो which part of the bird's body which part of the bird's body helps it in picking of food? Tell me, which part of the bird's body helps it in picking of the food? Is that feet, beak, wings or feathers? Tell me the right answer. '69 question answer दिया comment section में which part of the bird's body helps it in picking of food? Is that feet, beak, wings or feathers? अच्छा feet. घोड़े लगुच आम तो समस्त जाच बर्ड्स मानकर कौन थाए ना थंट थाए लंबा लंबा थंट थाए तो जेकोसी खाद्य से उठाती केमी उठाती तो पिक्रे ही उठाती सॉरी बिक्रे उठाती राइट फीट कोड आसला ठीक कहीकि देन भूल तापर भी सॉरी a bird uses its beak to grab food. A strong muscle called the gizzard chews off the food for the bird. Sometimes a bird has to eat small stones or gravels to help it grind off its food. Sometimes birds ना छोटो छोटो पत्थर बहुत ही छोटो छोटो पत्थर लाइक स्टोन गोड़ी गुड़ा से खाए तार डाइजेशन जदि किसी हार्ड जिंस खाई देथिबो तार गिजार्ड एते प्रॉपर्ली ताको ग्राइंड करि परिबनी ताको हेल्प करिया पई से स्टोन को भी खाई थाए ओके कंफ्यूज्ड मैम सेथि पई तो इजी क्वेश्चन आसे एंड इजी क्वेश्चन ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल राइट लाइक कोन भूल आंसर करि के आसंती इंस्टेड ऑफ राइट ओवर कॉन्फिडेंट हे जानती एटा की क्वेश्चन एग्जाम रे आसी जाई छी एमिति क्वेश्चन नहीं पिला मानकर मार्क कटे so be careful what you are saying and be careful while you are in the examination hall so that तमानकर किछि भूल हबनी छोटो छोटो मिस्टेक भी करबनी इजी इजी क्वेश्चन को देखि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस मु भी निजे फेस करिछि इजी क्वेश्चन छुडा को ही देखि दिया अरे एते इजी क्वेश्चंस केमिति को एग्जाम रे आसी परिबो ओवर कॉन्फिडेंट है कि भूल कर देगी आसे so never do that. Why are you asking that, Srimay ma'am? Ma'am, कर education qualification MTech in computer science. Anything else? So
Frogs catch their prey using their sticky tongue. Sticky tongue. Okay. See. So frogs रो भी सेम ही थाए अपन माने मे भी कहि देबे कि तारो हाइड लिव या फिर फोर लिम्ब यूज करी से किछि भी फूड हैला ताको ग्राफ करे नॉट एट ऑल so कौन यूज करे frogs catch their prey using their sticky quickly extending tongues they can rapidly flick their tongue forward to capture insects and other small prey okay so next question I guys answer diya the long neck of a giraffe helps it to the long neck of a giraffe helps it to swim fast, eat ground insects, reach high leaves, or fight predators. Or fight predators. What will be the right answer? अच्छा श्रीमय एथिपाई तुमको मो नंबर दरकार थिला कांटेक्ट चिट चैट करबा लागि लाइक गपिबा लागि so the long neck of a giraffe helps it to reach high leaves to reach high leaves next question देखो so the long neck of a giraffe helps it to reach high foliage for food engage in necking battles and provides a vintage point for the predator surveillance guys for sure मन रखो एटा like जेतेबेले स्टार्टिंग इयर्स थिला जिराफ माने जेतेबेले फर्स्ट पृथ्वी रे थिले सेतेबेले तांकर नेक एते लंबा हेइ नथिला फिरली से माने खाइबा लाइक तांकर कोन कहिबी प्रीवियस जो माने भी थिले तांकर एंसेस्टर्स कहि परिबा तो से माने ना तांकर धीरे धीरे खाइबा को बेकल लंबे लंबे तांकर वंस ना बेकल लंबा हे गला तापर जो माने तांकर अपरिंग्स आथिले से मानकर सडनली बेक लंबा स्टार्ट हे गला तापर जेते सब प्रोडक्शन आसिला तापर जिराफ मानकर लंबा बेक आसिला सेम वे साप मानकर भी आगुरु गोड़ थिला एंड से माने तार यूजेस बहुत कम कले थ्रू आउट तांकर सेटा वैनिश हे गला एंड तापर जतिक स्नेक से मानकर पाद ही नाही ओके नेक्स्ट गाइस which of these is a parasite animal which of these is a parasitic animal the options are leopard tick buffalo or horse which of these is a parasitic animal leopard tick buffalo or horse if red is red why is it red and why not blue it's a question guys Sai Prasad ka answer diya if red is red why is it red and why not blue ma'am what about eagles and others are not they use their feet to pick up food so I got confused हाँ से माने भी तांकर बिक यूज करंती पिक अप करिवा लागि फूड कंफ्यूज हेबार एथरे कोन अछि yeah so the right answer is tick the parasitic animal is a tick so have a look of the tick so tick is nothing त माने ओडिया रे जानि थिबो टिंक बोली भी ताको कुआ जाय छोटो छोटो बहुत ही छोटो छोटो थांती आ इजीली मरंतिनी ताको बहुत मारिया को पड़े या फिर पोड़ी देवा को पड़े and mosquito is also a parasitic okay जेतु ऑप्शन है नहीं so you can go through the right answer as a tick so right answer दिया a decomposer differs from a scavenger because a decomposer differs from a scavenger because the options are it hunts animal it eats living animals it breaks down matter at a microscopic level or it is a herbivore what will be the right answer guys Surya Chandrasekhar answer tame jani cho oh my god I'm so shocked kemiti janle answer so the right answer will be like decomposer kemiti different होंदी scavengers कटू so decomposer help करंती जो break down करिबारे suppose गोटे
लायन हंट कला सबुतिक पार्ट को से ना शिकार कला परे बॉडी रो खाएनी किछि पार्ट छाडी दिए तो जोटा रेस्ट ऑफ पार्ट छाडी दिए डिकम्पोजर मानकर हैला जे कोनोसी डेड बॉडी को ताकू बहुत ही छोट छोट मैटर रे ताकू डाउनफॉल करिवो ताकू डिकम्पोज करिवो लेटर ऑन स्कैवेंजर्स एउडा को भी खाई जानती so this is the different okay मैम टिक कोन एबे तो कहली टिक कोन पुणी टिंका टिंका तो कुआ scavenger versus decomposer guys there's a small difference so mainly animals के रहउछन्ती scavengers mainly microorganisms and invertebrates are the decomposers okay so consumes dead plants and animals and carrions kahara काम रहउची scavengers मानकर but consume the eliminated materials by the scavengers scavengers हैला carnivores हैला से माने जो रेस्ट पार्ट छाडी देले ताकू भी डिकम्पोज करंती को माने ना डिकम्पोज करंती हमरो डिकम्पोजर्स ओके नेक्स्ट सी which of the following is an example of a frugivorous animal guys frugivorous that means fruit eater okay which of the following is an example of a frugivorous animal guys eta bahut easy वाला question but तमन को आने कि कंफ्यूज हबनी एग्जाम टाइम रे एंड ए वर्ड गुरा ना बहुत ट्रिकी वर्ड पचारि दिए जोटा कि तमने कंफ्यूज हे जबो व्हाट इज फ्रूगिवोरस व्हाट इज ओमनिवोरस व्हाट इज कार्निवोरस तो या पर टिके तमनकर कोन कैप्चर रखिया पई तमने टिके भलो से आ विषय रे जानिबा लागि ए क्लास आसी एंड नो डाउट एटा हमर एनसीईआरटी ही कवर अप करू yes what will be goat bat owl or fox yes so the right answer will be bat so sai prasad tama answer pailo why red is red which of the following is an example of a frugivorous that is bat only depend upon the food for their food okay next why do carnivores have eyes in front of their heads why do carnivores have eyes in front of their heads the options are for better vision to hunt and judge distance to sleep better for 360-degree view मु जानि समस्ते कोडा आंसर दबो मते भगवान इमोशन देई नहांती सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन मैम इमोशन इमोशन गोटे बहुत ही टची वर्ड ओके जोटा कि समस्त पाखे भी न थाए तमें से जने जहाँ पाखे इमोशन ना तमें कहूच मु कहूनी देखा आग को मे भी इमोशन डेभलप हो देन प्लीज मत फर्स्ट जन अच्छा सो राइट आंसर तमने चूज कर टू हंट एंड जज डिस्टेंस मु भाबिली तमने 360-degree व्यू पई रखिथिबो but nevertheless the right answer is to hunt and judge distance carnivores have eyes in front of their heads okay so predators and the prey केमिति रहे तांकर देखंतु आखि रहउची एई पोजीशन रे एंड से को पर्यंत देखि पारंती ऑफ कोर्स एई पर्यंत देखि पारंती ओके बोथ आईज रे बोथ साइड को से एतिके एंगल रे देखि पारंती एंड ऑफ कोर्स तापर तांकर शिकार करंती नेक्स्ट गाइस which of the following animals uses a radula to feed radula use करे feed पई किए मैम मु न्यू स्टूडेंट आपन का टेलीग्राम चैनल पाऊ अच्छा चंद्रशेखर तमे न्यू स्टूडेंट ताहले तमे चंद्रशेखर पार्ट 2 आउ जने भी अछंदी चंद्रशेखर 1 टेलीग्राम चैनल परमिशन मिलीनी देबा लगी अदरवाइज देथां ठीक है 270 डिग्री अच्छा 360 नहीं 270 डिग्री ओ शिट मु सेटा कंपास पके की मापी थिले हेथांदा मापी परले सॉरी एटार आंसर दिया 76 रा आंसर दिया which of the following animals uses a radula to feed yes
दे देवी एते व्यस्त हुअनी दे देवी. So the right answer will be snail. Okay. So snail पाखरे ही radula थाए and से सेटा को use करे कोन तार खाद्य को ग्रहण करिबारे. See, this is the radula part. This is the radula teeth and the total part is the radula part. Okay. You can have a look. This is the esophagus and the radula teeth are there and the radula sac. Of course. Okay. Next, guys, which animal can digest bones along with flesh? Guys, आपण माने देखिथिबे लायन हो टाइगर हो एमाने कोन ना ओनली फ्लेश को खांती बोन्स को थ्री आउट कर दियंती बट एमिति भी एनिमल्स अछंती जे बोन को भी डाइजेस्ट करि पारंती. सो राइट आंसर विल बी vulture, crow, eagle or hyena. Tell me. हाँ ईगल केतेबेले बोन डाइजेस्ट करे देखि जे ईगल भी तो फ्लेश ही खाए ना. No, not at all. Right answer दियो. Which animal can digest bones along with flesh? आजिरा क्लास रे like I have been expect भी करी नथिली मो कि तम मानकर किछि भूल आंसर भी आसीबो. मु जानि छि क्रोकोडाइल. चंद्रशेखर मते टिके सांगरे नै कि जीवो प्लीज देखेबा पई कि क्रोकोडाइल केमिति खाउछि. हां तो बोन टा केमिति खाउछि सेटा मते टिके प्लीज देखियो. Yes, Ritam. The right answer will be the hyena. The hyena. Okay. This is the hyena. ताको आउ कोन खुआ जाय guys. माने पड़नी तार एक्चुअली वेडिया कहती बोधे हिंदी रे तार ना एंड ओडिया ना जो तमने जानिछो प्लीज लेट मी नो. वेडिया. So some animals can digest bones alongside flesh. This is due to specialized adaptations in their digestive systems. Okay, particularly strong stomach acids that break down bone and efficient grinding mechanisms. Animals like hyenas and breed vultures are all well known for their ability to digest bones. गधिया गधिया कौन भेड़िया गधिया तो गध ना डंकी. हाँ यार आंसर दिया. Which of these is a monogastric herbivore? What is the monogastric herbivore? So order out करके first answer दिया then हमको बुझाऊँ what is the monogastric. Okay. So cow, goat, rabbit or the buffalo. Tell me the right answer, guys. No. गधिया डिफरेंट थाए देन आम एरिया रे गधिया को नाहांती मु ए भी जानिनी. Yes. So right answer कौन होगा ना rabbit. So guys ये monogastric herbivore टा कौन? See suppose human digestive system भी हमारा कौन ना monogastric ही जीवा. But option ने जेतु rabbit देइची so हमें rabbit को ही choose करचे. Rabbit रा भी केमिति ना as human से मानकर भी digestion system था monogastric. That means कौन होची ना single chambered stomach. आमी जेमति देखले ruminant मानकर केमिति रहउची ना multiple stomach chamber अछि but monogastric रे कौन अच्छी ना only single chambered stomach है. Clear? Guys, clear about the monogastric? Next here, which of the following is not a characteristic of herbivores? Which of the following is not a characteristic of herbivores? The flat molars, the short intestines, multiple stomachs, or ability to digest cellulose? Or ability to digest cellulose.
What will be the right answer? Which of the following is not a characteristics of herbivores? So herbivores माने herb confuse होबनी herb रू कौन आसिला plant रू जो माने plant पे dependent करंदी तांकर food पाई they are the herbivores, right? So flat molars ताकू तो तमे odd one out करिवो like तांकर कौन flat molar system न थाए and sorry पचाची which is not ना the flat molars थाए से मानंकर ताकू रखी दबो short intestine guys herbivores मानंकर long intestine थाए ओके तांकर long intestine थाए and next देखो multiple stomachs ना एबे तो देखिले तांकर कोन single chamber stomachs वाला थाए and ability to digest cellulose yes तो कोटा हबनी ना short intestine हबनी एबे देखितिलो आउथरे देखो सो तांकर intestine कोन थाए ना बहुत ही long ही थाए rather than the carnivores. Okay, herbivore मानकर intestine long थाए rather than the carnivores. Okay. Next देखिबा फ्लैट मोलर्स तांकर टीथ जो थाए herbivores गाई मानकर दांत देखिछ ना एकदम फ्लैट आउ पूरा साइज गोटे शेप रही थाए एमिति हमर जेमति मनुष्य मानकर दांत पूरा बेहेडा कार अछि कार साइज अछि कार ईस्ट को कार वेस्ट को एमिति हे कि अछि बट सब herbivores मानकर टीथ पूरा गोटे समान थाए से माने जो हसिबे देखियो हला हमते फोटो उठै कि भी देखैबा कि से माने हसला परे केमति देखा जाय. नेक्स्ट गाइस fish feeding habit is observed in honeybees. Which feeding habit is observed in honeybees? The Carnivore, the Herbivore, the Nectarivory, or the Omnivore? Tell me, guys. What will be the right answer? Comment section में जल्दी जल्दी दियो. Okay, so Nectarivory काहेंगे कुआ जाए guys? तो primarily herbivore हेला carnivore हेला ए माने different अछंती but nectar ऊपर जो माने nectar means जोटा plant रो honey produce हुए जो part that is nectar जोठु भी हमरो flower suppose this is a flower very bad in drawing here guys गोटे minute ते भी नहीं के flower टे करि परिबिनी ओके तो जो पार्ट रे हमरा हनी थाए भीतर को नै की स्टिंग्स पुरै की से माने जते बदा नेक्टर हनी कलेक्ट करंती तो पार्ट इज नेक्टर एंड सेटु जो माने हनी कलेक्ट करंती ताकू कोन कोआ जाय ना नेक्टारिवोरी दैट्स सम बोटैनिकल वर्ड्स ओके फूल रस हां फूल रस ना और किछि जानि ना खाली फूल रस देखो ए नेक्टारिवोर is an animal which derives its energy and nutrient requirements from a diet consisting mainly or exclusively of the sugar-rich nectar produced by the flowering plants. Okay, by the angiosperms. Okay, next chalo. Which of the following materials is a good conductor of electricity? Tell me, which of the following materials is a good conductor of electricity? Is that plastic? Is that wood? Is that copper or rubber? Which of the following materials is a good conductor of electricity? Tell me. Yes. So, good conductor of electricity किया होगा copper. Next देखो
What is good conductor? Guys, we classify the materials as conductors and non-conductor materials which allow electricity current to pass through them are good conductors of electricity, and जो माने pass करिया को दियंतिनी are the bad conductors of the electricity. Okay. Next guys देखो. Which of these is a natural material? ए भितरु natural material कोटा? Nylon हेला, cotton हेला, plastic हेला, PVC हेला. Tell me the right answer in the comment section. Which of these is a natural material? Nylon, cotton, plastic, PVC. Confused हो जाओ? Yes. तो system को ही answer है ना? वो सब कौन गला? सोई गला? हाँ? So cotton is the natural material. So tell me natural material को हमें केमती different करूचे rather than the all synthetic material हेला, fiber materials हेला. आगो को आसुची synthetic material विषय रे तमानु कहिबी. So definition of a natural material कौन कहूसी? This is a material that is derived from plants, animals or that is from the ground level. That is natural material. It is possible to categorize natural materials into organic materials such as wood or fibers or inorganic materials such as stone or ore. Okay, some examples are copper hela, cotton hela, oak hela, silk. Clear? Next, the property of wing hammered into the seeds is called. जेतेबेले जेकोनसी गोटे मेटल को हेला ताको हमें जोर से हैमर करूचे थ्रू ए हैमर. तो ताको जेतेबेले तार इलास्टिसिटी बढ़ी जाउची ना, तो ताको कोन कहसे? डक्टिलिटी, malleability or conductivity or flexibility. What will be the right answer guys? Copper. Right answer there. The property of wing hammered into the seeds is called into thin seeds. Sorry, this पढ़ुची बार बार. Thin seeds. Into thin seed. बहुत ही easy guys. जेतेबेले जेकोनसी मेटल को सपोज रूपा हेला या फिर सुन्ना हेला सेटा जेते गोटे 5 ग्राम रो सुन्नाटा को देखिछो तले मेल्ट हुए केमिति गोटे छोटो गोल करि देंती ताकू अगेन ताकू बाडी 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 पूरा पतला वाला तारा बने की तापरे सेतिरे आहुरी कारुकार्य करिकि किछि भी हमर का ऑर्नामेंट्स तयारी करंती. सो जो प्रोसीजर ताकू पिटंती एंड सेटा स्प्रेड हुए सेटा को कोन कहसे? नो 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 नॉट डक्टिलिटी. Not ductility. Answer दिया. आउ गोटे चांस दउची. That is guys malleability. That is malleability. Okay guys, what is malleability? Look, malleability is a physical property of metals that defines their ability to be hammered, pressed or rolled into thin sheets without breaking it. Okay, jette patla chahibo taku sette patla kari paribo. And gold is the most malleable metal. Next question answer there. Which one of the following is used for making glass? Which one of the following is used for making glass? Is that marble? Is that sand? Is that clay or granite? Glass making re सेटा help हुए सेटा को metal. Marble हुए, sand हुए, clay हुए और granite हुए. What will be the right answer? Very good. What will be the right answer? This is sand. See? So कौन हुए? Like first the recycled वाला glass मिसे, then हमारा calcium carbonate भी रुहे as a component and sodium carbonate as a component, and the main component is that while making a glass. Okay, then heat दिया जिबो, then start हब हमरा को ना glass. Next question answer there. Which material is best suited for making cooking utensils? तो हमें जो रोसई करूचे guys,
ऑटो करेक्ट। तो गाइस आमे कुकिंग करूछे जो कढ़ई हैला डेक्सी हैला या फिर पिठा खड़िका हैला जे कोनोसी इक्विपमेंट्स रे आमे रोसई करूछे नो मैटर। ओके से सब जिंसटा कोथरे तयारी वुड रे तयारी एल्युमिनियम रे तयारी प्लास्टिक रे तयारी कॉटन रे तयारी आपण मान कहबे रोसई करछे माने जदी फायर सामना को जीवो वुड तो जळी जीवो प्लास्टिक भी तरली जीवो कॉटन भी जळी जीवो। सो रहिला कि एल्युमिनियम ही आज ऑड वन आउट करके जदी आंसर देला। ओके सो सेफेस्ट यूटेंसिल मटेरियल्स हमर तयारी होची स्टेनलेस स्टील रे सिलिकॉन रे बांबूस होची गाइस तार जो तयारी करे पे स्पैटुलास हैला ताको हमें बांबूस से तयारी करछ एंड वुड तयारी करछ बट मेन यूटेंसिल्स तार कोथि तयारी करूछे ना एल्युमिनियम रे। ओके so the cooking utensils the best material are generally those that offer good thermal conductivity durability and resistance to corrosion. Commonly used materials include copper asuchi aluminum asuchi stainless steel asuchi and cast iron asuchi। okay guys spatula next which of the following is a biodegradable material? Which of the following is a biodegradable material? Is that thermocol? Is that polythene? Is that banana leaf or plastic straw? Biodegradable पचारिचे ओके जोटा इजीली डिग्रेड हो पारिबो। आंसर दिया यस ये हबो ना बनाना लीफ ओके so wood hella bamboo hella bagasse hella so these are the biodegradable materials and guys biodegradable materials are substances that can be broken down by natural biodegradable process बहुत long period पर्यंत ताको लागिबनी कोन डिग्रेड हेबा पई इजीली डिग्रेड हेई परिबो ताको कोंती biodegradable process। next देखो which fiber is obtained from the cocoon of a silkworm? cocoon of a silkworm ru कोटा हमकु मिले cotton silk wool or nylon question ये आंसर अच्छी राइट दियो जल्दी ये सब सी आंसर दोच कोटार 87 रो सी आंसर दोच ना ये पूर्व बनाना लीफ ऑप्शन सी रे थिला कि अच्छा अच्छा हां ठीक अछि यार आंसर दियो very good so which fiber is obtained from the cocoon of a silkworm this is silk the total process तार केमिति होछि गाइस फर्स्ट हमर रहउछि फर्स्ट केमिति सिल्क ओम स्टार्ट होउचंती तार अंडर देन स्टार्ट कोसन ताको चारि पटे गोटे एमति जाला बिछेला टाइप रो then तांकर whole procedure is there you can have a look in later time so a silkworm cocoon is a protective layer spun by the silkworm larva to encase itself during its transformation into a pupa and later a moth it's a made of continuous silk fibers and a protein called sericin that acts as a binder so next question which of the following is not a metal? Which of the following is not a metal? Iron, copper, graphite or aluminum? कोटा गोटे metal नुह which of the following is not a metal? Is that iron, copper, graphite or aluminum? So iron गोटे metal, copper गोटे metal, aluminum भी गोटे metal, but graphite गोटे metal नुह. It is a metal नुह. So graphite गोटे कौन guys? जदि से metal नुह ताहाले से कौन? हुआ ग्राफाइट गोटे और फॉर्म कहि परिबा कहारो ना कार्बन रो गोटे डिफरेंट फॉर्म होचे हमरो ग्राफाइट तो ग्राफाइट रो डिफरेंट स्ट्रक्चर अछि जेमते कि कार्बन एटम रे से कोन हेक्सागोनल शेप रे से तार स्ट्रक्चर रखे ओके एंड तार जो बॉन्ड फॉर्मेट करे बिटवीन कार्बन एंड द ग्राफाइट हमरो कोन रुहे ना द कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द वीक फोर्स बिटवीन द लेयर्स
the weak covalent bond form করে। And graphite is a form of carbon characterized by its layered structure, making it soft, dark gray to black, and a good conductor of electricity and heat. It is a naturally occurring mineral and is used in pencils, lubricants, and various industrial applications. Clear? Also a semiconductor. Yes, that is mentioned. Next, nylon is an example of. Tell me, nylon is an example of natural fiber, metallic fiber, synthetic fiber, or woolen fiber. Nylon is an example of natural fiber, metallic fiber, synthetic fiber, or woolen fiber. Nylon is an example of, yes, this is synthetic fiber. Nylon is an example of synthetic fiber. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ natural fiber already କହିଥିଲି. So synthetic fiber कौन होउची ना, these are the synthetic fibers are man-made fibers. Different types of synthetic fibers are rayon hela, nylon hela, polyester hela, acrylic hela. Okay. Next देखो. Which one of the following materials is used to make mirrors? Which one of the following materials is used to make mirrors? Silver, iron, lead or tin? Mirror तैयारी करिबारे को मेटल को यूज करा जाय? Very good. ताहले जाई कि तैयारी करिछो तमे श्रीता ना कोन? This is silver. Okay, so silver sorry mirror are different layers actually guys थाए. So the first जो last layer आमे देखुचे सेटा रहउची float gas, but ता पूर्वरु थाए the sensitizer, the super sensitizer, the silver layer थाए in between the layers, and the paint base coat, then the epoxy paint top coat. Okay, so throughout this process तो directly आमे जोटा देखुचे glass देखुचे, but एई जो stage गुडा जदि न थांदा then हमको clearly image form हे न था. Okay, next देखो, which of these is used as a waterproof material? Which of these used as a waterproof material? Jute, paper, tarpaulin or cotton? हमारा waterproof material तैयारी करिबारे mainly को component use हुए? जूट हुए, पेपर देखो जूट एंड पेपर या तो वाटरप्रूफ ही नुआ, कॉटन आल्सो वाटरप्रूफ नुआ. सो ऑड वन आउट करके बाहरला गोटे दैट इज टार्पोलिन. एंड टार्पोलिन गाइस कोन, दिस इज अ जो हमर थाए ना वाटरप्रूफ मटेरियल. रेनकोट हैला, अम्ब्रेला हैला यूज करबा त मन देखि दिबो. दिस इज अ लार्ज शीट ऑफ स्ट्रांग फ्लेक्सिबल वाटर रेजिस्टेंस और वाटरप्रूफ मटेरियल ऑफ द cloth such as canvas or polyester coat if with the polyurethane or made of a plastic such as polyethylene. Okay, next देखो. Yes, next is wool is obtained from. wool कोठु आसे? plant seed रू, sheep रू, trees रू or cows रू? guys कोठु wool आसे? जल्दी जल्दी एटा सेकंड थॉट भी नेबा कथा ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आंसर देबा कथा. 92 question answer दिया. wool is obtained from. Yes, so wool is obtained from the sheep. Okay, so this is the process. First the shearing करंती, then ताकू भलो से धुआ धुई करी की पुन थरे आनी की सुखांती, then ताकू again प्रेस से जाई की तांकर जहा जेमती फॉर्मेट थाए पिटा पिटी करी की तांको प्रोसीजर रे पके की wool बाहरे. So wool is primarily obtained from the fish of sheep but also from other animals like goats, yaks, camels and the rabbits. And rabbits रो wool बहुत ही costly ही थाए. And guys, the specific type of wool depends on the animal from which is sourced, such as Kashmiri,
from goats or Angora from rabbits? Okay, Angora from rabbits. Angora rabbits पर question आसुची guys. Please keep it in your mind. Angora from rabbits and Kashmiri from sheep. Next चलो. Stainless steel is an alloy mainly used for. Stainless steel is an alloy mainly made of iron or aluminium, iron and carbon, iron and chromium, or aluminium and zinc. Cool. Stainless steel is an alloy mainly made of stainless steel कोथरे दिया iron and aluminium, iron and carbon, iron and chromium, or aluminium and zinc. No, not at all. Wrong, Sai Prasad. Again, stainless steel here हुए iron and chromium सहित. Okay, iron and chromium सहित. See, stainless steel is primarily an alloy of iron and chromium. It also commonly contains nickel and other elements in smaller proportions, but mainly the iron and chromium. Clear? The addition of chromium, typically at least 10.5%, is crucial for its corrosion resistance. Okay? Next, see guys. Piece of these materials is used to make chalk. आमे जो चॉक लिखुचे ब्लैक बोर्ड रे यूज हुए स्कूल डेज रे, तो सब स्मार्ट बोर्ड हो गलानी. स्टिल स्कूल डेज रे आमे माने तो फेस करिचे चॉक रे लिखुचन हम टीचर्स माने. तो से चॉक ता कोथरे तयारी? चॉक रे, क्ले रे, सैंड रे और लाइमस्टोन रे. यस, आयरन प्लस कार्बन हेले स्टील हबो, वेरस आयरन प्लस क्रोमियम हेले कोन हबो? स्टेनलेस स्टील. चलो right answer. Yes, this is limestone. So chalk is essentially a type of fine-grained limestone composed of primarily of calcium carbonate. What? Limestone are mainly consist of calcium carbonate. Next question answer there. What material is commonly used for making tires? What material is commonly used for making tires? Is that rubber, plastic, cotton, leather? Guys, odd one out. Plastic nahi, cotton nahi, leather. So somehow pila mane confuse houthibe, but not. This is the rubber. Okay. So main part tire ro maximum portion kete na natural rubber, then synthetic rubber. So half percent rohuchandi kona na rubber hi tiyari. Rest are the fabric hela, steel hela, and the jo color diya hochi black pine paper portion rahila. Those are different things. But the most common material used for making tires is rubber. Okay, both natural and synthetic. Very good. Next question answer there. Which of the following materials is transparent? Guys, transparent कोटा obviously तमने जानी पारुथुबो. Metal sheet दा नुहा, wood नुहा, brick नुहा. So this is glass. So the glass then guys transparent, translucent and opaque उपरे किछिटा तमनकर ideas थिबा दरकार. Transparent कोटा once allows all or most light to travel through it. This is transparent. It is possible to see clearly through transparent materials. And translucent कोटा जोटा medium level ला जेमिति allows some light to pass through, but it is not possible to see through translucent materials. जेमिति कि cotton हेला या फिर आमे जो डोर स्किन यूज करूचे, ओके पूरा डार्कनिंग करिया पई नो डोर स्किन यूज करूचे जस्ट लाइट को टिके स्टॉप करिवा लागि. एंड ओपाक कोडा ना टोटल जे ब्लॉक कर दे लाइट को जमा भी पास करि परिबो नाही लाइट ता देखि. ओके नेक्स्ट गाइस थी. Which among the following materials is obtained from animals? Animal through कोई material हमको मिले? Wool, silk, leather or obviously कौन होगा? All of this. Next here, which is a renewable material among the following? Which is a renewable material from all of the above? Which is a renewable material? Plastic, wood, petrol or coal? That means
वंस खत्म हेले अगेन आम ताको रिन्यू करि परिया प्लास्टिक नाही वुड नाही सॉरी प्लास्टिक नाही पेट्रोल नाही कोल नाही सो राइट आंसर कोन हबो ना वुड हबो अगेन आम कोन गछ लगेई परिबा आमर कौन से रिक्वायरमेंट हेले आम गछ लगेबा वेट करिबा गछ बड़ हबो देन आम पुनी वुड को यूज करि परिबा राइट नेक्स्ट सी so renewable source is what now a resource that can be used repeatedly and does not run out because it is naturally replaced such as solar wind hydro geothermal and the biomass energy this is energy katha kahuchi but renewable material is wood next chalo what is the primary material used in making pencils so pencil tiyari karibare primary material jota use hue what is that is lead graphite charcoal or iron iron to nuha lead भी nuha rahila ke graphite or charcoal so odd one out graphite so the primary material used in making pencils that is what lead and lead option is like guys acha lead भी अच्छे okay pencil but eta ko lead वाला कहिछि कहला option में जो lead अछि glass वाला lead कहिछि but एई to lead means ता जो ए जो लाइन टा अछि ना पेंसिल ग्राफाइट लाइन सेटा को लीड बोली कहिछि से वाला लीड अलगा ए लीड अलगा मने रखो एटा पचारिछि ता भितरे जेमति पेन रो जो थाए हमें कहू जे रिफिल तो ए जो रिफिल टा को लीड कहा जाउछि बट सेठी जो लीड में ऑप्शन देछि ताटा ग्लास को डिफाइन करके देछि तो एटा मेनली को द्वारा ना ग्राफाइट द्वारा ओके जोटा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन क्लियर Next, the last question, which of the following materials can be recycled easily? Which of the following materials can be recycled easily? The thermosetting plastic, the glass, the styrofoam or the ceramic. Guys, एबे ही तम मानकु glass formation time रे देखै थिली. Glass formation time रे देखै थिली कि recycled materials में सूची, sand में सूची. Okay. तो कोथिरे ना हमर ग्लास ऊपर कोथिरे ना ग्लास फॉर्मेशन रे रिसाइकल इजीली हे परिबो so recycling involves collecting and processing materials like glass paper cardboard metal plastic tires textiles and electronics to be purposed into new products but mainly and easily जोटा recycled हेजिबो that is glass okay easily recycled हेजिबो that is glass so it was end of the class and hope अपन मानकु class भल लागिथिबो enjoy करिथिबे thank you so much class end हे गला आ wait करनी आ option आसीबनी thank you so much guys have a good day take care of yourself and your parents thank you so much देखा again Friday okay with some computer questions कौन जीबा टाटा बाय बाय किछि तो लिखो सो देन क्लास एंड करिबा एंदी रुखा सुखा एंड करि देबे यस थैंक यू सो मच भल लागले तम मानक सहित